Hello, welcome to Concept Mediji. Today we are going to discuss about circular motion or the force required for circular motion. So force required for circular motion. Here I am going to explain about the expression of F is equal to mv square by r. बट आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. सो वाई acceleration in case of circular motion becomes v square by r. ये वाली expression, this expression basically is doubt for many students. ये expression बहुत students का doubt है. तो मैं ये expression कहाँ से आ रही है मैं इसको derive कर रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है. तो लेट मी ड्रॉ ए सर्किल. सपोज ये मेरे सर्किल है और ये है सर्किल का रेडियस, दिस इज आर. और सपोज हियर इट इज एन ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ. अभी सपोज हियर इट इज ए बॉल एंड आई एम टाइंग दिस बॉल विथ ए थ्रेड एंड आई एम रोटेटिंग दैट बॉल इन ए सर्कुलर पाथ. तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट द बॉल इज रोटेटेड, द बॉल इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ. तो ये बॉल जो है ये सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रहा है. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंज होती है. तो सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर, द वेलोसिटी इज v1 हियर, द वेलोसिटी हियर v2. जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वेलोसिटी चेंज है, फिर अगेन द वेलोसिटी चेंजिंग, द वेलोसिटी चेंजिंग, the again here at this point, at any point in a circle the velocity is continuously changing. Okay or not? So अभी मुझे प्रूफ करना है. सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था और रेडियस आपका r था. जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो उसका एंगल कितना चेंज किया. सपोज ये एंगल थीटा एंगल चेंज किया. सो मुझे अभी प्रूफ करनी है कि r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कैसे एक्सप्रेशन आता है. So for to prove that thing, I need to write. Suppose this is O point, this is M point, and this is N point. So ये triangle को मुझे draw करना है. So this is O point, this is M, and this is N, and this is your theta according to diagram. This is radius R, this is also radius R. And what is this? ये आपकी क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग, इसको मैं डेल्टा एस लिख रही हूँ. टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ए सर्किल इज फॉर्म्ड. देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ए पॉलीगन. ये एक पॉलीगन है, बहुत सारा आर्म है. इसका कितना आर्म है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आर्म का एक ऑक्टागन है. अगर ये 8 आर्म का ऑक्टागन को मैं और छोटा छोटा पार्ट में उसका आर्म्स को डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो मुझे सोमहाउ एक सर्किल का फॉर्म मिलेगा. अगर मैं फिर से इसको और रीडिवाइड करूंगी तो मुझे इन सच ए वे आई विल डिवाइड दैट सारा आर्म्स लुक्स लाइक ए पॉइंट. So I will get like in a form of circle. So that means in a circle each and every point represents a very small straight line. I mean to say that each and every point in a circle is represented as a very small straight line. So suppose a person standing at this position. Suppose a person standing at this point and अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो उसका डायरेक्शन क्या है? इन दिस डायरेक्शन. फिर यहाँ पहुँचने के बाद अगर ये इस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज किया देन दैट डायरेक्शन चेंज हुआ. फिर अगर यहाँ पहुँचने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज किया, एट दिस पॉइंट अगेन डायरेक्शन चेंज. सो अकॉर्डिंगली जब भी हम यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं सर्किल में यूज़ करूँ तो each and every point I assume that each and every point in a circle is a straight line. So after reaching here the person is moving, again next point when the direction changing, again in next point the direction is changing. That's why while moving in a circular path आपका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है. So that thing I have represented here also.
So like using that concept, जब person n point में था वो n to m point में शिफ्ट किया. दैट मीन्स ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट अस एज्यूम दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस. सो वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस को मैं डेल एस करके रिप्रेजेंट की हूँ. And the change in angle I represented is theta. And this is radius of circle. This is also radius of circle. So this is a triangle. So I get a triangle. मुझे अभी कौन सी triangle मिला? OMN triangle. Now come to the second triangle. Second triangle आपको कहाँ से मिलेगी? देखो, suppose this line, this is your V1. This arrow represents your V1. This represents your V2. V1 and V2 are vectors. So here this is V1 and this is V2. If I want to represent this, like you can say this V1 is nothing but this V1 is perpendicular to this radius. Similarly, V2 is also perpendicular to this radius. This is R. This is perpendicular to radius. This is also perpendicular to radius. If I will draw the triangle representing V1 and V2, so this angle must be theta. This is just by application of simple geometry. If this is 90 degree, this is 90 degree and this is theta, then definitely in between angle between V1 and V2 definitely is theta. So if I join like this, this is B, this is A and this is C. So these two triangle, now I got a triangle that is ABC. Now this triangle OMN and triangle ABC are isosceles triangle. So what I am trying to prove is that if these two triangles are same, the ratio of arms must be same. So I need to prove now MN divided by MO is equal to AC divided by AB. So let me write this thing in a complete new sheet. So this is MN by MO is equal to AC divided by AB. Let me redraw the triangles again. So this is my M, this is O, this is N, and this angle is theta. This is R, this is R, this is del S. So this is V2, this is V1. I'm just redrawing the triangles. This is B, this is C, this is A, this is C, and this is nothing but del V, change in velocity. Okay. So what I can write now? Mn, in place of Mn I can write del S, and Mo is nothing but R. In place of AC I can write del V divided by, in place of AB I can write V. It may be V1, it may be V2. Okay. So I got expression for del V by V is equal to del S by R. So instead of del V I can write V into del S divided by R. Can I write like this? Yes, definitely I can write like this. So what is the formula for acceleration? From motion, you know acceleration is nothing but change in velocity per time. Okay. So instead of this I can write del V divided by T. So acceleration is nothing but del V divided by T. That is equal to, instead of del V I can write V del S divided by R into T. So that implies acceleration is equal to del S divided by T multiplied with V divided by R. So del S by T, I just separated this del S by T part here and V by R part here. Okay. So del S by T, again you know that velocity is equal to distance or displacement divided by time. Distance traveled in a direction divided by time. So del S by T I can write this is V multiplied with V by R.
So I got the expression is v square by r. So from this, I can write acceleration is equal to v square by r. So we conclude that centripetal acceleration A is equal to v square by r. Now if I put the acceleration formula in the expression of force from Newton's second law, that is equal to mass into v square by r. So the centripetal force must be m into v square by r. So this is centripetal force. So thank you all. Thanks for watching. And if you like my video, please subscribe and comment, like and share.